Okay. Good afternoon, everyone. Good evening. Sorry for the interruption. थोड़ा सा technical glitch आ गया था. And I hope you people are doing wonderful. So today we're gonna be discussing the questions regarding developmental psychology or the mentioned part of the syllabus, that is lifespan development. Alright. So developmental psychology basically talks about your complete development, physical and mainly psychological development from the conception, which is like the zygote formation, the process of fusion of male and female gamete, fertilization के बाद जो zygote बनता है. So from the process of zygote formation, conception से लेके up to till death. Clear? So this whole lifespan, the this is the material of developmental psychology. The father of developmental psychology is known as Jean Piaget. ठीक है? He is known as the father of developmental psychology. चलिए, alright, चलिए शुरू करते हैं without wasting any further time. एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. एंड दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम जहाँ पे आप लोग बुक्स को उतना रेफर ना करें. राइट, यू नीड टू सेव योर टाइम. सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू कैन सॉल्व MCQs, सॉल्व PYQs, एंड with this just try to revise from your notes. Okay, don't go with the books or don't go for the lengthier notes. Just revise something which is very short and crisp so that you can get the maximum output without giving so much efforts. Right, because this time you have to be very you need to be working very smart and obviously hard. So the first question is, what is the primary focus of Erickson's theory of psychosocial development? सर आपने कल जो प्लेलिस्ट का वीडियो बारे में बताया था वो मिला नहीं. हाउ टू एनालाइज एवरीवन लाइक हु इज वाचिंग माय वीडियो. सो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, दैट्स माय ग्रुप, एंड द नेम ऑफ द ग्रुप इज एनेक्डोट फॉर CVT साइकोलॉजी. राइट, सो यू कैन सर्च इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट. मैं वहाँ पे अपने जितने भी वीडियोस हैं, ये वीडियो का लिंक मैं वहाँ शेयर कर दूंगा. ऑलराइट, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव माई नंबर तो ऐसा कोई और सोर्स होगा नहीं जहाँ पे आपको वो वीडियो में शेयर कर सकूँ. सो आई विल शेयर इट इन दैट ग्रुप, यू ऑल कैन ज्वाइन, एंड दैट्स अ पीयर ग्रुप. सो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. मैं जनरली उस ग्रुप को ओवरव्यू करता हूँ एंड आई कीप ऑन सीइंग द टेक्स्ट एंड मैसेजेस, एंड इफ आई फील लाइक कि यहाँ पे मेरा इंटरवेंशन ज़रूरी है फॉर दिस क्वेश्चन और फॉर एनी डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप. So the name of the group is Anecdotes for Psychology. Alright, chaliye. So the first option is B, the resolution of conflicts across 8 stages of life. So you know Erickson ने total 8 stages दी थी, and these stages were focused on mainly psychosocial part, है ना. Freud was mainly focused on psychoanalytic and psychodynamic part, and Erickson was, even though a neo-Freudian, so he believed unconscious, but he also focused on the, you can say, social part. So that's why his theory is known as psychosocial development of person. According to Jean Piaget, which stage is characterized by ability to think logically about the concrete events? So it's for a tip that you can say the topic for the Piaget is very important. So you know it has total 4 stages, and question are being asked from these stages, which of the following does not belong to this stage, which of the following has this stage. So the correct answer for this is correct. This is option number C, concrete operational. अगर एग्जाम में concrete event ना भी लिखा होता तो भी logical thinking is basically in concrete operations. ठीक है, abstract thinking, hypothetical deduction thinking, that is in the formal operations. Clear? stages याद नहीं होती हैं. इफत मैंने ट्रिक बताई तो थी क्लास में, यू कैन यूज दैट ट्रिक. ओके, क्लियर. चल, देन which of the following is an example of Vygotsky's concept of zone of proximal development? So zone of proximal development, you know, this concept was given by Lev Vygotsky. He has so much contributions in the educational psychology, and please ignore from the background noise if anyone is coming. So the problem with this theory is that he focused so much on the cultural part. So this is somewhat a criticism for this theory, because this theory उतनी ज़्यादा लेवल पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो. And ZPD and social interaction, social support, he focused on these 2 aspects very much. So ZPD is basically a child learns to ride a bike with the help of adult, without नहीं, with the help of. So it is basically a zone of proximal development, which means the amount of development you can have alone versus with the help of some other person who is like mature to you, who is senior to you.
तो इन दोनों बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. क्लियर? सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर ए. अ चाइल्ड लर्न्स टू राइड अ बाइक विद द हेल्प ऑफ अडल्ट. क्लियर? कैसे? क्योंकि वो खुद भी सीख सकता था. मे बी इट वुड हैव टेकन हिम 1 month, बट सिंस ही इज learning with the help of adult, he will take 15 days. So this, the you can say the amount of resources saved or the speed of the learning he got, this speed or this amount of resources is known as zone of proximal development. Clear? Then what is the primary characteristic of formal operational stage of cognitive development? So formal operation की stage पूछा है. You know there are 4 stages: sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operation. So this is the last stage of Piaget. Who is Piaget? The father of developmental psychology or father of lifespan development psychology. Clear? Scaffolding भी यही है. Scaffolding is the technique. देखो दो terms हैं, scaffolding and ZPD. Scaffolding is the technique where some senior or experienced person helps you to do something. This is a technique. And with the help of technique, this scaffolding, you can create a zone of proximal development. ठीक है? Scaffolding is a technique, and with the help of this technique, you can create a zone of proximal development. Clear? This is the logic. So, question number 4 का क्या होगा? The ability to think abstractly and logically. Correct. Since the abstract concept is used here. तो ये ट्रिक है पहचानने की abstract की. Logical thinking है just तो concrete operational. But if it's talking about abstract thinking, then it will be basic what? क्या हो गया है मेरे मोहल्ले के कुत्तों को? सो इफ दैट द केस विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देन ये चीज होगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशंस. क्लियर? चल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटैचमेंट थ्योरी, व्हाट डज द सिक्योर बेस रिफर्स टू? सो अटैचमेंट थ्योरी इज बेसिकली व्हाट? एन्सवर्थ अटैचमेंट स्टाइल. ठीक है, मैरी एन्सवर्थ. स्ट्रेंज एंजाइटी सिचुएशन टेस्ट इन्होंने दिया था. क्लियर? सो सिक्योर बेस, बेसिकली सिक्योर अटैचमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? दे आर आस्किंग दिस थिंग. क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट. इट इज द केयर गिवर्स प्रेजेंस दैट प्रोवाइड्स द चाइल्ड विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है सो दैट दे कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम एंड दे डोंट फियर, लाइक दे डोंट फील एनी स्केयर्ड और एनी एंजर, जो एंजाइटी का सिचुएशन होता है वो सारी चीज़ें में ना हो. दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड सिक्योर बेस. क्लियर? देन which of the following best describes the crystallized intelligence? So right now we are doing the questions of intelligence. So we have almost 100 plus questions based on intelligence only in the Vijeta batch. So this is one of the part of crystallized intelligence, part of intelligence theory given by GFGC theory, Kettle, है ना? तो इस तरह के बहुत सारे questions हैं. This theory is like part of many things because crystallized intelligence, fluid intelligence, lifespan के बारे में बात करता है. Clear? Correct. It is knowledge accumulated throughout the life experiences. Right. So what is the difference between fluid and crystallized intelligence? Yesterday in the Vijeta batch, I've told this. Fluid intelligence is basically what you get from your parents. It is somewhat genetic. It is basically, it basically means the, you can say, reasoning ability, analytical ability you have. And crystallized intelligence is basically that whatever amount of knowledge you've been gathering throughout your life. This is crystallized intelligence. Clear? And again, if you want to practice more MCQs like this, you can consider my batch, Vijeta batch. It is going on. Today we'll complete the intelligence topic, and from the next week we'll start with research and development topic. I have like mentioned about this batch in like my all videos, so you can refer to the videos for the more detail, or you can join my Telegram group and there you can ask me anything regarding the preparation or regarding anything related to psychology. So what is the primary focus of the socio-emotional selectively theory by Laura Katzen? So this is basically Laura की आपकी socio-emotional selectivity theory. Now this is a new concept. What is this concept? It says basically that whenever the person is developing or whenever he is going through the various developmental stage of his life, his priority about social dimension and emotional dimension changes. Maybe at some point of time, people will be more concerned with their social relationships, what they think about the society, how society looks at them. But maybe at some point, they will be more emotionally dominated. Clear? So basically this theory says that this is somewhat a subjective level, that a person may differentiate between what his priority are.
Are they social? Are they emotional? And based on that, he will develop his behavior. Based on that, he will move on with his behavior. Right? So क्या होगा? The changing priorities and social goals in the older adulthood. Clear? Option number B is the right answer. It's like a new concept for you people. हाँ, correct. Which of the following is a characteristic of a pre-operational stage of cognitive development? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पियाजे से प्री ऑपरेशनल स्टेज से पूछे जाते हैं. मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस स्टेज ओनली ऑफ द पियाजे. ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर प्री ऑपरेशनल स्टेज वेरी केयरफुली. क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, इट इज सिंबॉलिक थिंकिंग. राइट, सिंबॉलिक थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले एंड ऑल दीज थिंग्स, एनिमिज्म, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी प्री ऑपरेशनल का पार्ट आती हैं. द चाइल्ड प्रिटेंड्स दिस हाईलाइटर एज एन रॉकेट, सो वो ऐसे शुरू करके उड़ा देगा इसको. राइट, यू हैव सीन चिल्ड्रन प्लेइंग लाइक दिस, दैट दे आर लाइक ट्रीटिंग अ डॉल लाइक अ रियल ह्यूमन बेबी, है ना, उसको उस तरह से पैम्पर करेंगे, फीड करेंगे. दैट इज व्हाट सिंबॉलिक थिंकिंग, एनिमिज्म, सिंबॉलिक प्ले, ये सब इसी का पार्ट आता है. क्लियर? ओके. अकॉर्डिंग टू बॉलवे, द अटैचमेंट सिस्टम इज बायोलॉजिकली बेस्ड एंड प्रोवाइड्स विच ऑफ द फंक्शंस? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बायोलॉजिकल पर्पस क्या होता है? दैट वी आर अटैच्ड टू अवर केयर गिवर्स. व्हाट इज द बायोलॉजिकल पर्पस फॉर दिस? गुड क्वेश्चन. करेक्ट, सम आर गिविंग द राइट आंसर्स. ओके, करेक्ट. This is option number C, ensuring proximity to caregiver for survival. है ना? Why do we connect with our caregivers? This is because of the survival instincts. Clear? And इससे एक related experiment हुआ था हैरी हैरलो ने. Right? There the objective was to identify the importance of touch, physical human touch, physical human warmness. वो एक जो sense होता है touch का, warmness का, texture का, right, that is an important role, that why monkey baby was so much attached to his mother, है ना, ये reason था. So this is one of the experiment you can say relatable to Harry Harlow's experiment of sensations. Then which of the following best defines the concept of identity diffusion? This is an important theory. मैंने अपने बैच में पढ़ा रखी है, फाउंडेशन बैच में, and in the विजेता बैच when the questions will come I'll again explain this theory in brief. So identity diffusion theory, and also it is given in the PPTs and notes, so all those who can have the access, they can read it. Generally books में उतना ही mention नहीं होता है, but sometimes they have asked these questions. So identity diffusion, basically this theory was given by who? Marcia. Clear? तो मार्शिया ने थ्योरी दी थी. करेक्ट. सो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली यू हैव 3-4 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन्स आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट, अचीवमेंट, फोरक्लोजर, डिफ्यूजन, मोराटोरियम, 4 तरह के होते हैं ये. दिस बेसिकली हाउ यू डेवलप योर आइडेंटिटी. दिस द पार्ट ऑफ दिस. क्लियर? क्या होगा बताइए डिफ्यूजन में? अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू अ स्पेसिफिक रोल बिलीव? नो. एन एब्सेंस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट? नो. द स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल हैज नॉट येट एक्सपीरियंस्ड अ क्राइसिस और मेड अ कमिटमेंट. Clear? Option number D. Correct. This is a condition where people have not yet experienced any crisis, nor they have developed any commitment to a specific identity. ठीक है? This is the stage of diffusion. Then best क्या होता है? Identity achievement. ठीक है? What does the term nature versus nurture means? बच्चों वाला क्वेश्चन है तो easy question. Nature versus nurture क्या होता है? Correct. बच्चों वाला क्वेश्चन. Option number B. The influence of genetics versus the environment on human development. Clear? Nature is basically genetics, nurture मतलब होता है environment. Clear? Okay. किसका ज़्यादा impact है? No questions, है ना, इसका कोई आंसर नहीं है सच. So there is a nonsense questions कि किसका impact ज़्यादा अच्छा है ना, या किसका impact ज़्यादा important है. Both are equally important. What is the key concept behind Lawrence Kohlberg's theory of moral development? तो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी का की कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर क्या? ए. द स्टेजेस थ्रू विच मॉरल रीजनिंग डेवलप्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. ये देखा था उन्होंने कि बच्चों में किस किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट होता है, एंड इट गोज टू अप टू अडल्ट लेवल. क्लियर? इसमें सोसाइटल नॉर्म्स एंड मॉरल बिहेवियर का ऑप्शन लग सकता है कुछ लोग करेक्ट, बट द मोर एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? हाइंसबर्ग जो आपका हाइंस डिलेमा था वही है. देन इन विच स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ कंपीटेंस एंड सेल्फ एस्टीम? बताइए.
कंपीटेंस, सेल्फ एस्टीम कौन सी स्टेज में आता है? गुड क्वेश्चन. प्रॉबली अगर आपने एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ा होगा तो ही यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज फ्रॉइड एज सच डिडंट टॉक्ड अबाउट दिस थिंग डायरेक्टली, है ना. उसने बात की है बट डायरेक्टली उतना बात नहीं करी है, एंड आप पढ़ोगे भी नहीं, बेसिक बुक्स में उतना नहीं लिखा हुआ ये चीज़, आई एम गेसिंग. ठीक. सो दिस थिंग कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ टू थ्योरीज. एरिक्सन की थ्योरी को भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे. क्लियर? बिकॉज इसका आंसर एरिक्सन की थ्योरी में ज़्यादा बेटर दिया था, वेयर दे हैव कंपेयर्ड द टू थ्योरीज. करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर सी, latency stage. So in latency stage, your psychosexual energy, libido, that is suppressed, and the whole focus is in academic learning, sport, skill developments. This is basically competency and self-esteem. Clear? This is latency. The concept of egocentrism, कौन सी stage में होता है? Egocentrism. In which stage you will find egocentrism? Important question for the exam. क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर बी. प्री ऑपरेशनल में इकोसेंट्रिज्म भी होता है, राइट. दिस बेसिकली मीन्स दैट चाइल्ड लैक्स द एबिलिटी टू सी समथिंग with another person's perspective, so he always looks for things with his own perspective. This is egocentrism. What is the term for the decline in cognitive function that can occur in late adulthood characterized by memory loss and confusion? क्या होगा ये बताइए. मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन हो रहा है, बट देर इज नो मेंशन ऑफ मोटर इम्पेयरमेंट्स, सो अल्जाइमर नहीं होगा. क्या होगा ये? डिमेंशिया, राइट. सो समवन वाज आस्किंग रिसेंटली, किसी कमेंट में मैंने आंसर कर दिया, व्हाट इज सेनाइल डिमेंशिया. सो डिमेंशिया कैन अकर जनरली इन एनी टाइम, है ना. अगर थोड़ा सा लेट अडल्टहुड में हो रहा है तो वी कॉल इट एज डिमेंशिया, बट इफ इट इज हैपनिंग ड्यू टू वेरी ओल्ड एज, सो देन वी कॉल इट एज सेनाइल डिमेंशिया, है ना. तो आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सेनाइल डिमेंशिया इज बेसिकली that the dementia or the memory loss problem due to very old age. This is senile dementia. Okay. Which of the following is the primary characteristic of secure attachment according to Ainsworth? So secure attachment का क्या example है? बताइए. सिक्योर अटैचमेंट का क्या एग्जाम्पल है? नहीं, कंफ्यूजन तो डिलीरियम से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या डिलीरियम आपको ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं. एंड सिर्फ डिलीरियम का कंफ्यूजन नहीं पूछा है ना, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन. सी हमेशा दिस इज अ ट्रिक फॉर एनी सब्जेक्ट. इफ एनीथिंग इज रिटन एंड करके, तो जो पहली चीज होगी ना, जनरली इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो एंड करके ऑप्शंस में जो पहले लिखा होता है हैंड में, जनरली इट इज कंसिडर एज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो यहाँ पे मेन फोकस आप मेमोरी लॉस पे रखोगे. क्लियर? एंड अगेन डिलीरियम ऑप्शन में नहीं है. बताइए क्या होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 सी. करेक्ट. द चाइल्ड सीक्स द कंफर्ट फ्रॉम केयर गिवर आफ्टर बीइंग अपसेट. So he was upset, now he wants caregiver to give him some comfort, some warmness. This is option number C. Then, in Kohlberg's theory of moral development, what is the defining characteristic of post-conventional level, right? So you know there are 3 levels and what? 6 stages. Pre-conventional, conventional and post-conventional. So post-conventional का क्या आंसर होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर. Correct. It is option number B. Moral reasoning based on abstract principle and ethical standards. This is option number B, where you deal with the situations based on your own ethical standards and some abstract principle. This is the last and highest level of morality according to Kohlberg a person can achieve. Chale. Which of the following is the hallmark of embryonic stage of prenatal development? So embryonic stage का सबसे important milestone क्या है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए. करेक्ट. इट इज फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर. रिमेंबर फॉर द ट्रिक, एवरी ऑर्गन, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग डेवलप्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज मेजरली. ठीक है, सब कुछ यहीं पे डेवलप होना शुरू हो जाता है. लास्ट क्या होती है? फीटल स्टेज. यहाँ पर सब कुछ लाइक यू कैन से इवॉल्व होता है, मॉडिफाई होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, बट डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक से शुरू हो जाता है.
What does the term deferred imitation refer to in child development? इंपॉर्टेंट टर्म है deferred imitation. क्या होगा ये बताइए. What is the meaning of deferred imitation? क्या होगा? Okay. Okay, some people are giving the right answer. Correct. It is the ability to imitate an action at a later time. So you have this ability that you can learn some behavior, observe it, then retain that behavior, and later in some future time you can imitate that behavior, you can represent that behavior. This is deferred imitation. Clear? Okay. In Lev Vygotsky theory, which concept refers to the idea that social interaction plays a fundamental role in cognitive development? क्या होगा ये बताइए. What is the answer? Imitating when the caregiver is not present. Right. You can say. Correct. It is scaffolding. Refers to the concept where the idea social interaction plays a fundamental role in cognitive development. Clear? That is scaffolding. यही concept होता है कि जितना ज़्यादा social interaction होगा, and again if it is a experienced person, तो वो आपके cognitive development में काफ़ी ज़्यादा help करेगा. This is scaffolding. Clear? Alright. तो आज के लिए इतना रखते हैं. Again, my Vijeta batch is live right now, and this is the most sensitive and most crucial time if you are preparing for the CVT examinations, because it is not even 1 month left, right? So अभी होली है, चाचा भैया की शादी है, सबकी शादीज भी हैं, फंक्शंस भी हैं, right? तो बहुत कम टाइम मिलने वाला है आप लोगों को. एंड अगेन इफ यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, एटलीस्ट यू कैन हैव 3000 क्वेश्चंस, 1500 यहाँ से 100 क्वेश्चंस, 100 लाइक 1000 प्लस क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट के होंगे. सो एटलीस्ट रफली यू कैन हैव 2800 क्वेश्चंस मिक्स रेडी विद योर सेल्फ. तो अगर इनको आपने 2 बार भी रिवाइज कर लिया तो आई कैन नॉट गारंटी कि आपके मार्क्स 270 प्लस आएंगे, बट एटलीस्ट 230 240 प्लस जरूर आ जाएंगे, राइट? अगेन नॉट गारंटीड, आपके एफर्ट्स भी मैटर करते हैं, राइट? सो अगर आप जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू विल डू इट, then there is a very high probability that you can score at least 240 250 above marks. Again, एग्जाम का पेपर किस तरह से आएगा इस चीज़ पे डिपेंड करेगा. ये नहीं कि बहुत टफ पेपर आ गया एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं 280 आने चाहिए तभी अच्छी बात है. नहीं, द मोर इजी पेपर मोर यू हैव टू स्कोर. हार्ड पेपर मीडियोकर यू हैव टू स्कोर. लो स्कोर कहीं नहीं करना है. अगर बहुत लाइक डिफिकल्ट पेपर आ गया, अगेन हाई स्कोर विल बी अराउंड 240 250. बहुत ही डिफिकल्ट आ गया मे बी 220. बट अगर बहुत ईजी आ गया लाइक दिस ईयर्स पेपर 280 295 290 इस तरह का स्कोर लाना पड़ेगा टू गेट इनटू द फर्स्ट लिस्ट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो. क्लियर? चलिए, होपफुली वील अगेन मीट वेरी सून with the new topics, with the new MCQs and some strategy related to preparation and many more things, right? So just prepare your exam and you can join my Telegram group also. The name is Anecdotes for Psychology. Alright, so आप इसको ज्वाइन कर सकते हो and you can ask any query related to batch, related to CVT Vijeta batch or your preparation or anything like that. Alright, चलो मिलते हैं. Bye bye. All the best for your preparation.